बोल कितना है 10-15 मिनट Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare
हरे कृष्ण प्रभु जी, सदा हरिनाम प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। और 5 मिनट है, 4 मिनट्स है प्रभु जी। और ठीक है, जब आएंगे तो प्रभु जी बताएगा प्लीज। हाँ प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा। बहुत अच्छा सुंदर सा कीर्तन किया आप लोगों ने। माता जी का स्वर तो अच्छा ही है और आप लोग तो एकदम बड़े भक्त हैं। हम लोग बहुत सौभाग्य है कि बक्सर प्रभु और टीम ने श्याम देश को धन्यवाद किया। चंद्र प्रभु, थैंक यू फॉर कोऑर्डिनेटिंग। एंड
देख सकते हैं हम लोग कि बस वही है। प्रभु हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। छोटी सोई है कि जागी है? हाँ, सो गए हैं। ठीक है, ठीक है, एकदम बिंदास। ठीक है। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को, आप लोगों की पूरी टीम को हमारी तरफ से एक हरे कृष्ण मंत्र श्याम जी की तरफ से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू। बलदेव, भगवान बलदेव गौर। हरे हरे। Prabhu has joined again, or Sadharana Prabhu? Yes, he's joined. Prabhu Yeah, joined Prabhuji actually. you have made him a co-host, right? Yeah, I'm making post. Yeah, Prabhuji. Hare Krishna. Yes, Tapo Divyam Prabhuji, pranam to you. Hare Krishna. This is Radha Hare Prabhu. Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. Nice to see you after a long time. Nice to see you too, Prabhu. And I'm happy to be here. Yeah, I remember meeting you in the European tour, and it was so nice that you agreed to take the class. And let me just give a small introduction, because many devotees may not know you. Just Fine. give me a Thank you. and we will be having a translation by Himango Prabhuji as you speak in English. Yes. Line or two, whatever you like to, and then you will translate. Himango Prabhuji, आप है ना? Okay, fine. हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्ण प्रभु। हम इधर ही। Hare Krishna. Hare Krishna. Welcome all for the Shamadesh Mangalati program of today, auspicious month of April. We are very fortunate to have His Grace Tapo Divyam Prabhuji with us today. तो आज हमारा बहुत अच्छा सौभाग्य कि पूजनीय तपो दिव्यम दास प्रभु हमारे बीच में उपस्थित है। His Grace has been in this movement for over 23 years, and he is a senior preacher in Finland and many European countries. Hello. Hare Krishna. Himango Prabhuji, can you hear me? हाँ, yes प्रभु। Your voice. हाँ, अभी आ रही आवाज आ रही? हाँ, okay. आवाज क्लियर आ रही? हाँ जी, क्लियर? Yeah. तो बहुत ही वरिष्ठ प्रचारक है और फिनलैंड में और बहुत देशों में, यूरोप के जितने भी देशों में प्रचार करते हैं, वरिष्ठ प्रचारक है ये। He is the temple president of Helsinki ISKCON also, and Prabhuji is the senior disciple of His Holiness Dhanvir Goswami Swami Maharaj. तो प्रभु जी हैं एलेंस की जो मंदिर के अध्यक्ष हैं, और ये परम पूजनीय दानवीर गोस्वामी महाराज के वरिष्ठ शिष्यों में से है। We all know that Maharaj had set up Rupanuga Vedanta College in US, and he is one of the very old philosophical preachers that we have, and Prabhu is following in his footsteps. तो आपको मालूम है कि हमारा जो वहाँ पे जो अमेरिका में जो है वो भक्ति वेदांत कॉलेज है, जहाँ पे पूरा हमारे जो दर्शन शास्त्र है, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना मत का, उसका प्रचार करते हैं दानवीर गोस्वामी। तो उनका जो अनुसरण कर रहे हैं प्रभु जी भी अपने गुरु का। Recently, one of our devotees, Sanjeev Kumar, had been to Finland, and unfortunately, he got into COVID. Ramakrishna Prabhuji was interacting with me, and I was able to get in touch with the team there in Finland, Divyam Prabhu and Gopinath Prabhu. They were very extremely helpful. Made sure that he got prasadam and took care of him in all ways. तो हम लोगों को अभी याद होना चाहिए कि प्रभु जी वहाँ पे जो संजीव प्रभु वहाँ पे है ना, कोविड हो गया था उनको, जब यूरोप में गए थे, तो तब हमने तुरंत ही प्रभु को हमने संपर्क किया, उन्होंने उसको प्रसाद वगैरह सब दिया, और जितना भी जो सहायता हो सके उन्होंने पूरा सहायता दिया था उनको, काफ़ी उनका देख रेख किया था। In fact, Sanjeev Prabhu has come back a few kgs more. तो इसलिए देखा जाए तो संजीव प्रभु जब लौटे तो मोटे होके लौटे थे वहाँ से।
So thanking Prabhuji and all the team and welcoming him for this for the morning session. A big Hare Krishna mantra for his good health. Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Rama, Hare Hare. Tapo Divya Prabhuji, over to you. Thank you very much, Prabhu. Thank you very much for your kind presentation. And I'm very happy to be here. My humble obeisances to all of you, ISKCON Dubai and all the devotees there in United Arab Emirates. I'm honored to be there, and I would like to thank His Grace Radha Baba Gaura Prabhu for this opportunity to speak. And by the grace of Guru and Gauranga, I'll be able to say something. So I'm just asking here, in the normal situation, we would sing Radha Madhava. Do we sing here also Radha Madhava, or shall I speak right away, or how would you like me to do? If you want to speak, Prabhuji, I mean, sing, we are okay with it, but we will not be able to repeat it with you because it creates a Zoom backlash. Yeah, I understand. But you can sing, surely sing. We'll listen to you. Yeah, No I will shortly sing, and then we will start. Okay. Yes, yes. Thank you. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardhari, Gopi Jana Vallabha Girivardhari, Yashoda Nandana Vraja Jana Ranjana, Yashoda Nandana Vraja Jana Ranjana, Yamuna Tiravana Chari, Yamuna Tiravana Chari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jayam Vishnupada Paramahamsa Parivraj Gacharya Stotra Satashi Srimati Labhai Charana Ravinda Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai, Rantara Srimad Bhagavatam Ki Jai, Sri Gauranitai Ki Jai. All glories to the Asam devotees, Hare Krishna, all glories to the Asam devotees, Hare Krishna, all glories to the Asam devotees, Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Bhagavate Vasudevaya. Narayan Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udirayet Prayesh Vapatresu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Sloke Bhaktir Bhavati Naishtiki. So today we will read Srimad Bhagavatam, the second canto, chapter 5, the cause of all causes, and text number 4. आज हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद से अध्याय 5 के
श्लोक नंबर 4 से हम अध्ययन करने जा रहे हैं। So this is Narada Muni speaking to his father, Lord Brahma. Yad Vigyano Yad Adharo यद अज्ञानो यद धारो Yad Vigyano Yad Adharo विज्ञानो यद आधारो Yat Parastvam Yat Atmatak Yat Parastvam Yad Atmakaha यद परस्त्वम यद आत्मकः Yat Parastvam Yat Atmakaha यद परस्त्वम यद आत्मकः Ekasrijasi Bhutani एक सजसी भूतानि Ekasrijasi Bhutani एक सजसी भूतानि Bhutair Evatma Mayaya भूतेर एवात्म मायया Bhutair Evatma Mayaya भूतेर एवात्म मायया Yad Vigyano Yad Adharo यद विज्ञानो यद आधारो Yat Parastvam Yat Atmakaha यद परस्त्वम यद आत्मकः Ekasrijasi Bhutani एक सजसी भूतानि Bhutair Evatma Mayaya भूतेर एवात्म मायया. So I guess we go to the word-to-word translation, or yes, the synonyms. Word-to-word translation. Yad Vigyanaha Govinda. sorry. Is there anyone who would like to sing then the mantra? No, Prabhu, no. You can continue. Okay, thank you. Word-to-word translation. Yad Vigyanaha, Yad Vijnana, the source of knowledge. ज्ञान का स्रोत. Yad Adharaha, यद आधार, under whose protection. जिसके संरक्षण में. Yat Paraha, यद परह, under whose subordination. जिसकी अधीनता में. Tvam, त्वम, you. तुम. Yat Atmakaha, यद आत्मकः, in what capacity? बिना हैसियत से. Ekaha, एकः, alone. अकेले. Srijasi, सजसी, you are creating. सृष्टि करते हो. Bhutani, भूतानि, the living entities. Bhutaihi, भूतहे, with the help of the material elements. भौतिक तत्वों के द्वारा. Eva, एवं, certainly. निश्चय ही. Atma, आत्मा, self. स्वयं. Mayaya, मायया, by potency. शक्ति से. The translation and purport by His Divine Grace Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. My dear Father, what is the source of your knowledge? Under whose protection are you standing? And under whom are you working? What is your real position? Do you alone create all entities with material elements by your personal energy?
अनुवाद। हे पिता, आपके ज्ञान का स्रोत क्या है? आप किसके संरक्षण में रह रहे हैं? आप किसकी अधीनता में कार्य करते हैं? आपकी वास्तविक स्थिति क्या है? क्या आप अकेले ही सारे जीवों को अपनी निजी शक्ति के द्वारा भौतिक तत्वों से उत्पन्न करते हैं? Purport. तात्पर्य। It was known to Sri Narada Muni that Lord Brahma attained creative energy by undergoing severe austerities. So you can read full purport, then I will read The whole purport, okay. Yes. As such, he could understand that there was someone else superior to Brahmaji who invested Brahma with the power of creation. Therefore, he asked all the above questions. Discoveries of progressive scientific achievements are therefore not independent. The scientist has to attain the knowledge of a thing already existing by means of the wonderful brain made by someone else. A scientist can work with the help of such an awarded brain, but it is not possible for the scientist to create his own or a similar brain. Therefore, no one is independent in the matter of any creation, nor is such creation automatic. तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा यहाँ श्री नारद मुनि को ज्ञात था कि ब्रह्मा जी ने कठिन तपस्या करके सर्जन शक्ति प्राप्त की थी। अतः वे यह जान सके कि ब्रह्मा जी से भी कोई श्रेष्ठ है जिसने ब्रह्मा को सर्जन शक्ति से भरपूर किया है। इसलिए उन्होंने ये सारे प्रश्न पूछे। अतः प्रगतिशील वैज्ञानिक उपलब्धियों की खोजें स्वतंत्र नहीं होती। वैज्ञानिकों को पहले से विद्यमान वस्तु का ज्ञान अन्य किसी के द्वारा प्रदत्त अद्भुत मस्तिष्क द्वारा प्राप्त करना होता है। एक वैज्ञानिक इस प्रकार से प्रदत्त मस्तिष्क से कार्य कर सकता है, लेकिन उसके लिए अपना मस्तिष्क या इसी तरह का अन्य मस्तिष्क उत्पन्न कर पाना संभव नहीं है। अतः किसी भी सृष्टि के मामले में न तो कोई स्वतंत्र है न ऐसी सृष्टि स्वचालित है। हरि बोल। हरे कृष्ण। Om Makyanatimirandhasya Kyananjanashlakaya Chaksurunmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupah Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Uttapadakamalam Sri Gurum Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrasatam Sahagana Raghunatam Itam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Sri Vishakam He Krishna Karuna Sindho Dinapandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanjana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrisapano Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarupyascha Kripa Sindhavyaevacha Patitana Pavanepyo Vaishnavepyo Namo Namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. The verse again. Yat Vijnano Yat Adharo Yat Parastvam Yat Atmakaha Ekas Rijasi Bhutani Bhutar Evatma Mayaya. My dear Father, what is the source of your knowledge? Under whose protection are you standing? And under whom are you working? What is your real position? You alone create all entities with material elements by your personal energy. हे पिता, आपके ज्ञान का स्रोत क्या है? आपके किसके शासन में रह रहे हैं? आप किसकी अधीनता में कार्य करते हैं? आपकी वास्तविक स्थिति क्या है? क्या आप अकेले ही सारे जीवों को अपनी निजी शक्ति के द्वारा
भौतिक तत्वों से उत्पन्न करते हैं। So these are the questions of human life. तो हमारे जो मनुष्य जीवन के ये सब प्रश्न है। Narada Muni has asked already quite a few questions before this verse, but in this text 4, he starts to ask questions that are actually meant for the human life. यहाँ पे जो नारद मुनि जो प्रश्न पूछ रहे हैं ब्रह्मा जी से, एक्चुअली वो हमारे मनुष्य जीवन के लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। Is there anyone behind this? Why am I here? Who am I? These are proper questions for a human being. तो कोई भी एक मनुष्य है, उसको ये प्रश्न एक स्वाभाविक रूप से आना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मेरा क्या लक्ष्य, क्या उद्देश्य जीवन का। ये सब जो एक स्वाभाविक रूप से प्रश्न एक मनुष्य को आना चाहिए अपने मन में। Srila Prabhupada, he writes in the purport of the very first verse of the Srimad Bhagavatam 1:1 as follows. श्रीमद् भागवतम में श्रीमद् श्रील प्रभुपाद ने जो पहला जो स्कंद है, पहला अध्याय, पहला श्लोक में ऐसा बताया है, तो हम बताने जा रहा हूँ मैं। It is a quote. It is natural that the philosophical mind wants to know about the origin of the creation. तो इसलिए ये बहुत ही स्वाभाविक है कि हमारा ये कैसे हमारा सृष्टि की रचना हुई, वो हम लोग सब जानना चाहते हैं। At night, he sees the stars in the sky and he naturally speculates about their inhabitants. तो इसलिए रात के समय में आप देखेंगे, वो देखता है कोई मनुष्य की बहुत सारे जो वहाँ पे सितारे हैं, और फिर उसको उसमें जो वो होती है उसमें कि हाँ इसका क्या कारण है, कैसे, और वो बहुत ही एक आनंद का अनुभव करता है। Such inquiries are natural for man because man has a developed consciousness which is higher than that of the animals. तो ये बहुत ही स्वाभाविक रूप से है प्रश्न उठना किसी के मन में कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। तो क्योंकि हम चेतना है जो मनुष्य की, वो पशुओं की चेतना से उच्च है, इसलिए जो प्रश्न है यह उठना स्वाभाविक है। So this passage of the purport in the first verse of Bhagavatam has been actually very important for me, because when I was young, we used to have a telescope, and we used to watch with my little brother. We used to go to an island and watch the stars with the telescope. तो ये मेरे लिए एक्चुअली मेरे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला जो स्कंद का भागवतम का और पहला जो श्लोक का जो तात्पर्य है, क्योंकि मैं जब छोटा था तो मैं और मेरे भाई है ना, हमारे पास एक टेलीस्कोप का दूरबीन था। वो दूरबीन हम ना लेके जाते थे एक अंतरद्वीप में ले जाके वो दूरबीन से हम पूरे जो सितारे हैं आकाश में वो हम देखते थे। So especially in the autumn starry sky, that's very visible in the countryside here. तो बोलते हैं कि जैसे ये जो जब वहाँ पे जो पतझड़ का होता है मौसम, तो उसमें ये जो जितने भी जो सितारे हैं वो उनके देश में है ना बहुत ही स्वच्छ रूप से, स्पष्ट रूप से दिखते हैं, इसलिए वो वहाँ पे जाते थे इस मौसम में। So it was an amazing scene in an island in the middle of the lake to watch that wonderful starry sky. तो इसलिए हम जो वहाँ पे अंतरद्वीप में जाके वहाँ पे बहुत अच्छा लगता था हमें, कि खासकर इस मौसम में कि उस टाइम में ऊपर जाके हम जो जितने दूरबीन से है वो सितारे देखें आकाश में, बहुत अच्छा लगता, बहुत आनंद आता था। So it was natural to start to speculate what is there. Is there life in those planets? What are those planets? It would be nice to know. इसलिए कभी-कभी ये मन में प्रश्न उठता था और बहुत ही कुछ एकदम आश्चर्य लगता था कि ये है क्या चीज,
ये जितने भी जो ग्रह दिख रहे हैं हमें, क्या वहाँ पे जीवन है, वहाँ पे भी लोग रहते हैं जैसे हम लोग रहते हैं यहाँ पे। तो ऐसा करके ये बहुत ही एक स्वाभाविक रूप से प्रश्न हमारे मन में भी उठते थे। Of course, a lot of things had to happen, and a lot of sufferings had to be there before I really got into the contact of the devotees of Lord Krishna and the ISKCON. तो मैंने जब जो इस्कॉन के जो भक्त अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण महाराज के भक्तों के संपर्क में आने के पहले बहुत सारे मेरे जीवन में समस्या आए, बहुत सारे कष्ट मैंने झेले, बहुत सारे दुख मेरे को लगे, कहीं मानसिक मेरे को काफी परेशानी रहती थी। But really, this International Society for Krishna Consciousness gives the answers for all these questions, and these answers are here in the Srimad Bhagavatam. तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय श्रीमद् भागवतम में आने के बाद मुझे जितने भी जो मेरे जो प्रश्न थे वो सब प्रश्न के उत्तर मुझे मिले, और खासकर ये जो प्रश्नों के उत्तर है वो श्रीमद् भागवतम में है, ये सब प्रश्नों के उत्तर है जो like the last chapter, I believe, of this second canto is called Srimad Bhagavatam is the answer for all the questions. तो जैसे कि श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद का जो अंतिम अध्याय है, अंतिम अध्याय में ये कि भागवतम सभी प्रश्नों के उत्तर देता है, ये उसका जो शीर्षक भी है उसका अध्याय का, तो सब हमें प्रश्नों के उत्तर भागवतम से मिलते हैं। Yes, the chapter 10, Bhagavatam is the answer to all questions. ये उसका शीर्षक ही ऐसा है कि भागवतम जो है वो जितने भी प्रश्नों का उत्तर है, जितने भी प्रश्न है हमारे पास में। So this is what the human life is meant for asking these very, very important questions, questioning the reality that we are living in at the moment. इसलिए जो हम लोगों को जितने भी जो प्रश्न है जो और सच्चाई सचमुच में हमारे जीवन की वास्तविकता है वो हमें उनसे अवगत होते हैं, कि हम जो वास्तविकता में रह रहे हैं अभी हम लोग, तो वास्तविक प्रश्न के उत्तर भी हमें मिलते हैं यहाँ पे। So Narada Muni, he asks these important questions from his father, and actually his father, later on you will see how, or we will all see how Brahmaji is very, very happy to hear all these questions. तो यहाँ पे जो नारद मुनि है अपने पिता ब्रह्मा जी से ये सब प्रश्न पूछ रहे हैं, और उनके जो प्रश्न इतने मतलब वो थे, मतलब अच्छे प्रश्न थे, तो उनको ये प्रश्नों को सुन के ब्रह्मा जी काफी प्रसन्नचित हो गए थे। Because it gives the great opportunity to speak about the almighty personality of Godhead, Lord Sri Krishna. तो इसलिए यहाँ पे बहुत ही मतलब उनके लिए अच्छा था कि अभी उनको एक अवसर मिला कि जो परम भगवान के बारे में, उनके बारे में कुछ श्रवण करने का, उनके बारे में कुछ बोलने का। Here in Finland, we have by the grace of the disciples and followers of Srila Prabhupada in the beginning of 80s, we have the great possibility to preach Krishna consciousness. ISKCON is an official religious movement here. तो हमने 1980 के करीब के दशक में, जब 1980 में ये हमारे श्रील प्रभुपाद के जो शिष्य उन्होंने काफी मतलब इसके लिए परिश्रम किया, काफी प्रयास किया कि इसको हमें ना यहाँ पे फिनलैंड में, खासकर यूरोप में, वहाँ पे इसको अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत को हम लोगों ने उसमें उसका पंजीकरण किया जाए, और उसको मतलब जो सरकार में उसकी मान्यता प्राप्त की जाए सरकार के द्वारा। And with this official position, we have also a possibility to teach Krishna consciousness as religion in the schools. तो इसके साथ साथ हमारा ये भी उत्तरदायित्व है कि हम कृष्ण भावनामृत को है ना, उसको भी शिक्षा दी जाए सब स्कूलों में, ये भी हमारी एक उत्तरदायित्व है। So one of my services is to do this work here in Finland. So we have Hindu children, Hare Krishna children in the schools, and we teach Krishna consciousness there. इसलिए हमारा ये मेरी सेवा है कि हमारे पास जो कुछ हिंदू जो बच्चे हैं
हिंदू बच्चों को हमें कृष्ण भावनामृत के बारे में उसकी मैं शिक्षा देता हूँ हमारे स्कूल में. So it's always very like enlivening, heartwarming when a small child asks these kind of questions in the class. तो इसलिए ये बहुत ही हमारा जो हमारे हृदय को छू लेने वाली बात होती है कि एक छोटे छोटे बच्चे इस टाइप की जब प्रश्न पूछेंगे तो हमारे हृदय को बहुत ही ये बहुत अच्छा लगता है, सुहाना लगता है और एकदम छू जाता है हमारे हृदय को. So the devotees are very happy to hear the questions, such as the questions given by Narada Muni to, or asked by Narada Muni to Lord Brahma. इसलिए जो भक्त लोग हैं बहुत प्रसन्नचित हो जाते हैं ये सब प्रश्न जो नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से किए हैं उनको सुन के. But many times it's not so easy to come to the point of asking these important questions. लेकिन कभी-कभी बहुत बार ऐसा भी होता है कि इतना ये आसान नहीं होता कि ये सब प्रश्न पूछे जाएं. Like I said earlier, I had to suffer quite a bit before I really became serious in the spiritual life and really started to look for the answers. तो जैसे मैंने बताया कि जब मैं ये कृष्ण भावनामृत में आने के पहले काफी मैं भी पीड़ित था, मानसिक रूप से भी काफी पीड़ित था मैं और काफी मतलब कष्ट झेल रहा था मैं कि जब तक कि मैं कृष्ण भावनामृत में आया उसके बाद मुझे सब प्रश्नों के उत्तर मिले फिर मैं खुश हो गया, मैं आनंदित हो गया. So the suffering actually, like Bhagavad Gita, the first chapter is called Visada Yoga. Suffering is not really altogether bad thing. तो यहाँ पे देखा भगवद गीता में बताया कि ये जितने भी जो हमारे जो कष्ट हैं जो जीवन में जो दुख हम जो यातना जो झेल रहे हैं ये एक्चुअली देखा जाए तो ये पूरा मन में ही है वो तो. Through suffering, Arjuna connects to the Supreme. लेकिन ये जो जितने भी जो यातना जो कष्ट है वो अर्जुन को है ना परम भगवान के साथ में संबंध स्थापित करते हैं. And he takes shelter on Lord Sri Krishna and submits himself as his disciple. और इस तरह से उन्होंने फिर अर्जुन ने कृष्ण को अपने आप को समर्पित किया और उनके शिष्य बन गए कृष्ण के अर्जुन. So from the devotee's point of view, suffering is an opportunity. तो भक्त के एक्चुअली के हिसाब से देखा जाए तो ये जितने भी जो कष्ट है दुख है एक्चुअली ये बहुत अच्छा अवसर है कि भगवान को अपने आप को समर्पित करने के लिए भक्ति में आगे बढ़ने के लिए. Actually, from the devotee's point of view, whatever happens to him, that's all by the grace of Lord Sri Krishna. तो अगर देखा जाए तो भक्त के हिसाब से देखा जाए तो जितने भी जो वो जब भक्त ऐसा सोचता है कि जो भी कुछ के जीवन में हो रहा है वो भगवान कृष्ण के कारण ही हो रहा है, उसके जीवन में जो भी कुछ घटित हो रहा है. But many times it is suffering that really makes us serious. तो कभी-कभी ये ऐसा हम देखा भी गया है कि जो हमारे जो कष्ट है हमारे दुख है वो काफी हमें भक्ति में गंभीर बना देता है. There are 4 different personalities according to Bhagavad Gita who approach the Supreme. इसलिए जो भगवद गीता के हिसाब से जो बहुत सारे जो है व्यक्तित्व हैं उन्होंने है ना ये जो भगवान कृष्ण के की तरफ आते हैं, भगवान कृष्ण के समक्ष अपने आप को समर्पित करते हैं. So those who are those who suffer, those who are in economic trouble, those who are inquisitive, and those who seek knowledge. तो जैसे भगवद गीता में बताया गया कि जो दुखी हैं और जिनको जो जिज्ञासु हैं और जिनको अर्थ की आवश्यकता होती है, जो ज्ञान की आवश्यकता वो सब परम भगवान के पास आते हैं. So many times, or you could say that in my case it was maybe a mixture, but mainly the suffering which really took made me serious. वैसे मेरे केस में देखा जाए तो
तो जितने भी मेरे जो कष्ट थे मेरे को, और जितने मेरे को मानसिक जो यातनाएं थी, वो मुझे एक्चुअली एक अवसर प्रदान किया कि मैं ज्यादा गंभीर हो जाऊं भक्ति में और भक्ति में आगे बढ़ूंगा। Suffering and a little bit of inquisitive and seeker of knowledge, you could say. तो उसके साथ साथ जो कष्ट के साथ साथ मुझे ज्ञान पाने की भी उत्सुकता थी, और मेरे में जिज्ञासा भी थी कि हम कौन है क्या है। तो ये सब चीज उसके साथ साथ थे मेरे साथ। But the main thing is that one comes in contact with the Supreme. Yoga comes in contact with the Supreme. तो सबसे ज्यादा मुख्य चीज ये है कि जब व्यक्ति है ना, जब किसी परम जो सत्य है, परम सत्य के योग में आता है, उनसे आके जुड़ता है, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। So this is very, very important, and it would, at the moment, you could say that it could be a great opportunity for people to come in contact. ये बहुत बड़ा ये सुनहरा अवसर है लोगों के लिए भी कि वो हमारे संघ में, भक्तों के संघ में आने का ये बहुत अच्छा अवसर है। With the Supreme, because of the present day world situation. और खासकर अभी जैसा जो स्थिति चल रही है, तो उससे तो हमें जो परम भगवान, परम सत्य, उसके संपर्क में आना बहुत आवश्यक है। Brahmante pramite kon bhagyavanti Guru Krishna prasade pai bhakti lata bij. Those who, yeah. So those who are those who really want to know answers for their suffering, for the origins and all that, then they become serious, and then Krishna in the heart shows a guru for that kind of a person. इसलिए जो कुछ लोग हैं जो बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं और उनको जिज्ञासा रहती है कि हम क्यों हैं, हम उसका कारण क्या, दुख का हमारा और हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है, ये सब उनको जिज्ञासा भी होने लगती है और क्यों हम दुखी हैं। तो फिर कृष्णा ने ऐसे लोग, जब कृष्ण के पास आते हैं वो लोग, तो कृष्ण फिर ऐसे लोगों के पास में गुरु भेज देते हैं। And by the grace of Guru and Krishna, then we have the opportunity for the devotional service. तो फिर ना गुरु और कृष्णा की कृपा से हमें फिर हम भक्ति में आगे बढ़ने का हमें अवसर मिलता है। So this is however, it's not that people are running to ISKCON movement, and why is that? तो इसका मतलब ये नहीं है कि कई लोग है ना, हमारा अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन, संभावना मत आंदोलन है, उसकी तरफ लोग भागते हुए आ रहे हैं, ऐसा इसका मतलब ये नहीं है। This material world is like later on in this chapter, it will be understood how this material energy is extremely powerful, but it has no power in front of Lord Krishna. तो यहाँ पे इस अध्याय में हमें ये सब जो सूचना प्राप्त होती है और ये भी मालूम पड़ता है कि हमें जो भौतिक शक्ति कितनी शक्तिशाली है, लेकिन कृष्ण के समक्ष उतनी ज्यादा शक्तिशाली नहीं है भौतिक शक्ति। सही है। So when being in the material energy, there's so many different things to do. Whatever our situation is, we are very busy, engaged in the material, in the works of the material energy. तो हम देखते हैं कि हम बहुत ज्यादा व्यस्त भी रहते हैं, हमारे जो भौतिक जो शक्ति के उसमें आके भौतिक जो हमारे बहुत सारी गतिविधियां हैं, और गतिविधियों को हमें करना पड़ता है, उसमें काफी हमारी व्यस्तता रहती है उसमें। So in spite of all the sufferings and the situation in the world, we tend not to be inclined to the spiritual life. तो इतनी ज्यादा जो परिस्थिति अभी जैसे चल रही है पूरे विश्व में, कितने ज्यादा कष्टमय जीवन है, तो फिर हमें ऐसा ही लगता है कि हम
आध्यात्मिक जीवन की तरफ इसको मोड़ें, ऐसा कभी विचार नहीं आएगा कि नहीं हमें नहीं जाना चाहिए आध्यात्मिक जीवन। हम जरूर निश्चित रूप से उसमें जुड़ जाते हैं आध्यात्मिक जीवन में। That's why it is important that the devotees, they all the time seek different kinds of means to give Krishna to the people, to give people the opportunity to know who they are and what is this world and what is the source, who is the source of everything. ऐसे जो भक्त लोग भी हैं, ये अलग अलग टाइप के जो तरीके अपनाते हैं कि लोगों के पास जाके ये सब बताने का कि ये भौतिक जगत क्या है और ये कष्ट है, हमारे बस का कष्ट का कारण। से बहुत सारा ज्ञान जो आध्यात्मिक रूप से ज्ञान देख के लोगों को कृष्ण भाव में लाने का प्रयास करते हैं। Krishna says in the Bhagavad Gita, 9th chapter, text number 2, Raja Vidya Raja Guhyam Pavitram Idam Uttamam Pratyaksha Vagamam Dharmyam Susukham Kartum Avyayam. He says, this knowledge is the is the king of education, the most secret of all secrets. It is the purest knowledge, and because it gives direct perception of the self by realization, it is the perfection of religion. It is everlasting and it is joyfully performed. तो इसलिए यहाँ पे भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि ये जो ज्ञान है, ये सब जितने भी जो विद्याएं हैं उन सब का राजा है, और इसके अलावा जितने भी जो हम जो ये जो ज्ञान है वो सबसे ज्यादा ये रहस्यमय भी है, और इससे इस ज्ञान से भी हमें ये ज्ञात होता है कि हम इस भौतिक जगत में क्यों आए हैं और क्या हमारा कारण, यहाँ पे क्या उद्देश्य, हमारा लक्ष्य क्या है। ऐसे करके बहुत सारी चीजों, बहुत सारी विद्याओं का हमें प्राप्त होती है, बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होता है। Srila Prabhupada further elaborates in the purport that this knowledge is the most confidential, transcendental knowledge because it involves understanding the difference between the soul and the body. तो श्रील प्रभुपाद ने भी यहाँ पे बताया दूसरे श्लोक के उसमें तात्पर्य में कि ये जो ज्ञान है ये बहुत ज्यादा ये गुप्त ज्ञान है, और क्यों, क्योंकि ये है ना आत्मा और परमात्मा के बीच में जो संबंध को के बारे में बताता है हमें। And of all the confidential knowledge, it is the king of knowledge because it culminates in the devotional service to Lord Sri Krishna. तो क्योंकि ये जितने भी जो विद्या है उनका राजा माना गया है ये ज्ञान को, ये आत्मा और परमात्मा के बारे में, और ये हमारी जो भगवान कृष्ण की जो भी संबंध स्थान उनके कृष्ण की, भगवान कृष्ण की भक्ति देता है हमें। So further, Srila Prabhupada elaborates that there's so much education given in the world. तो इसलिए श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बताया कि बहुत सारी जो शिक्षा पूरे विश्व में इसको दी जा रही है। Especially nowadays, we are from all the sources. There's information coming in. तो इससे जितने भी जो स्रोत है वो सबसे हमें सूचना प्राप्त हो रही है आजकल हर स्रोत से। And there's all the time new, you could say, different departments of education emerging. और ऐसे देखा जाए तो ज्यादातर ऐसा होता है कि जो हमारे जो शिक्षा का जो डिपार्टमेंट है, शिक्षा का जो है डिपार्टमेंट, वो उसके ऊपर उठ के आता है। So much information, so much knowledge is there, but practically no knowledge, no university is giving the knowledge of the soul, what to speak of the knowledge of the Supreme Soul. लेकिन इतना सारा ज्ञान होने के बाद, इतना सब विश्वविद्यालय में सब कुछ होने के बाद भी हमें कोई भी ऐसा जगह नहीं, अभी कोई विश्वविद्यालय वगैरह कुछ नहीं है जहाँ पे हमें आत्मा के बारे में जो ज्ञान दिया जा रहा है, ये कभी कहीं पे भी नहीं है ऐसा। So this is the problem that we here in the material world, we are very, very busy in trying to solve the problems of life through technology or different kinds of material knowledge. तो हम ये आज के जमाने में आप देखेंगे कि जो तो सब लोग व्यस्त हैं कि जितना भी जो वैज्ञानिक अनुसंधानों के पीछे और वैज्ञानिक शिक्षा प्राप्त करने में
विज्ञान के बारे में वो जानने के लिए उसमें बहुत सारा हमारा समय ऐसे चला जाता है भौतिक जो शिक्षा के पीछे. But there's no institution, of course now by the grace of ISKCON there's some, but practically no institution compared to how many universities and sources of knowledge or institutions of knowledge are there. There's practically no knowledge of the soul and the supreme soul. तो आप देखें कितने सारे विश्वविद्यालय हैं, कितने सारे हमारे महाविश्वविद्यालय हैं, वहां पे भी कहीं पे भी आप देखेंगे नहीं कि हमारे जो आत्मा और परमात्मा के बारे में हमें ज्ञान दे. So no one is. We are very busy in understanding the present, for example, the present problem with viruses and so many things, and means to cure the diseases and so on and so forth. इसलिए हमारा अभी आजकल बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं, और उन सबकी जो हमारी समस्या है, बीमारियों के से ग्रस्त है कई लोग, तो उनकी जो समस्या को हल खोजने में ही, उनका हल करने में ही लोग हैं उसमें व्यस्त हो जाते हैं. But we will die anyway. एक दिन तो हमें मरना ही है. Of course, also the Vedic principle is that we have to take care of our body. अच्छा, ये तो आप देखा है वैदिक सिद्धांत भी है, उस वेदों में भी लिखा गया है कि हमें अपने शरीर का देखरेख करना है. And we have to do our best in order to maintain the body and the soul together. तो इसलिए हम देखा जाए तो उनमें वैदिक सिद्धांत में ऐसा बताया गया कि हमें काम करना पड़ता है कि हम ताकि हमारे शरीर और आत्मा को हम दोनों को साथ में रख सकें. So that's natural, and that's why we also there's Ayurveda and so on and so forth. तो इसलिए ये बहुत ही स्वाभाविक है, इसलिए हमारे पास भी जो एक बहुत ही जो प्राकृतिक जो चीज वो आयुर्वेद हमें मिली है. But the truth is that at one point we have to leave this body behind. लेकिन जो सत्य कड़वा सत्य ये है कि एक दिन हमें तो शरीर छोड़ना ही पड़ेगा हमें. So that's why these questions like Narada Muni is asking here are of extreme importance. इसलिए यहाँ पे जो नारद मुनि में इसलिए इस प्रश्न को पूछ रहा है जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न देखा जाता है हमारे जीवन में. Who am I? What was there before my birth? What will be there after my death? तो हमारे में ये हमेशा प्रश्न उठना चाहिए कि हमारे जन्म के पहले मैं क्या था और इसके बाद मेरी जो मृत्यु हो जाएगी उसके बाद क्या होगा. ये हमें इसके बारे में ज्ञान होना बहुत जरूरी है. And then understanding who is, or asking questions, who is there behind everything? Who is behind this material nature? Who is behind all of us? Like Srila Prabhupada is stating in the purport of the verse, that someone created the brains of the scientist. तो इसलिए हमें कभी कभी प्रश्न उठता है कि जितनी भी जो सृष्टि हुई है, सृष्टि की रचना हुई है, उसके पीछे किसका हाथ है, जो कुछ भी घटित हो रहा है उसके पीछे किसका हाथ है. तो ये तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ने ये बताया गया है कि जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क तो ऑलरेडी उसमें है आपके पास, लेकिन वो मस्तिष्क को दूसरा मस्तिष्क बनाना अभी किसी के लिए भी संभव नहीं है. It was not the scientist himself, and nor is he able to do or create from scratch brains like he has. तो जो जितने भी जो साइंस वैज्ञानिक हैं वो कोई भी ऐसा अनुसंधान के द्वारा ऐसे खोज नहीं कर सकते हैं और ऐसा फिर जो मस्तिष्क नहीं बना सकते हैं जैसे कि वैज्ञानिकों के पास है. So these questions should be asked, and in a way it's to a certain extent it's healthy to be doubtful. तो इसलिए ये जितने भी जो प्रश्न हमें ये पूछना चाहिए, और इसके लिए ये बहुत ही अच्छा है कि हमेशा हम शंकालु रहें, हमें शंका रहे, तो फिर हमारे को प्रश्न आएंगे फिर दिमाग में. Doubtful meaning that
that not blindly accepting what is happening here in the material world and just following it. Okay, everyone is doing, everyone is, you know, studying, going to the university, forming a family, you know, making a career, and you know, making making property, and then leaving everything behind to their children and grandchildren. इसलिए ये जो जितने भी अभी जैसे हम लोग ऐसा नहीं है कि हमें जैसे लोग जैसे कर रहे हैं और विश्वविद्यालय में जाकर पढ़ाई कर रहे हैं, तो नौकरी के दौड़ रहे हैं और अपने खाने पीने का उसमें व्यवस्था में लगे हुए हैं, उसी में सब व्यस्त है। तो हमें इन लोगों का अनुसरण नहीं करना है, लेकिन But be doubtful. लेकिन Why am I doing this? You know, I have to die at one point, and then what happens then? You know, I will have to give up everything. तो बोलते हैं कि हमेशा में ये हमेशा शंका रहना चाहिए, हमारे ये प्रश्न उठना चाहिए हमारे मन में कि मैं एक दिन जरूर मुझे मरना ही है, तो फिर ये मरने के बाद क्या होगा, उसके बाद पहले जब मैं जन्म लेने के पहले क्या होगा, ये सब जो प्रश्न स्वाभाविक से उठना चाहिए हमारे मन में। One should question the reality, this reality that, and that way then come to these important questions. तो इसलिए जो हमारे जो प्रश्न है वो एक्चुअली वास्तविकता है, अगर ये प्रश्न हमारे अगर मन में आता है तो, और हमें वास्तविकता का हमें फिर बोध होता है हमें। But still it is very difficult without the help of and without the grace of the devotees. लेकिन ये बगैर भक्तों की कृपा के और बगैर भक्तों की सहायता के ये सब का समाधान ढूंढना बहुत मुश्किल है। So this is why Srila Prabhupada has created the International Society for Krishna Consciousness, to educate the people in large, in great masses, to educate them of the principles of spiritual life. तो इसलिए ये जो श्रील प्रभुपाद ने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण महामंडल की स्थापना की है, और जिसमें बहुत सारी आध्यात्मिक उन्होंने पुस्तकों का भी प्रकाशन किया है और उन्होंने लिखी भी है, तो जिससे लोग है ना पढ़ के है ना उनको ये सब प्रश्नों के जो उत्तर वो स्पष्ट हो जाए और वो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण महामंडल से जुड़े वो लोग। And work in the society in a way that we could be able to create our own educational system, and even better to make it official also in the, you know, in the society. तो इसलिए अच्छा होगा कि हम समाज में भी इस ज्ञान का प्रचार प्रसार करें और लोगों को वास्तविकता का क्या बोध कराएं हम लोग। Like one of the rare places, such places is situated in Hungary, the Bhaktivedanta College, the university that is funded and accepted by the Hungarian government and also the whole European Union. तो यहाँ पे देखा है तो हंगरी में एक ऐसा स्थान है जहाँ पे जो भक्ति वेदांत जो है जो संस्था है, ये हमारी जो भक्ति वेदांत जो शिक्षा की संस्था है, वो है ना हंगरी के सरकार ने और इवन यूरोपियन यूनियन ने सब ने उसको मान्यता दी हुई है, और वो संस्था अभी भी चल रही है आध्यात्मिक ज्ञान देने के लिए। This education is very important. There's so, like Srila Prabhupada stated in the purport of this text number 2 of the 9th chapter Bhagavad Gita, that there's so many institutions of knowledge, but so little or practically none of the soul and the supreme soul. तो यहाँ पे अपने तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ने बताया जैसे भगवद गीता के उसमें कि बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं, बहुत सारे जो स्कूल हैं, बहुत सारी शिक्षा दी जा रही है, भौतिक शिक्षा है, लेकिन कहीं पे भी कोई ऐसा किसी भी विश्वविद्यालय में किसी भी कॉलेज में ऐसा नहीं है कि कोई भी संस्था में जो शिक्षा संबंधी संस्था है जिसमें आत्मा और परमात्मा के बीच में ज्ञान दिया जाए। Like Srila Prabhupada states in the goals of ISKCON, that to systematically educate people in the spiritual life. श्रील प्रभुपाद के हमारे जो उसमें जो हमारे ISKCON का जो आंदोलन के जो उद्देश्य है उसमें ये भी है कि जितने भी लोग हैं उनको है ना बहुत ही एकदम अच्छे ढंग से उनको शिक्षित किया जाए, एक सिस्टम जिसमें होना चाहिए, उससे सिस्टमेटिक ढंग से हम उनको शिक्षित करना। And it is happening.
it is happening in the world that there's all the time we are developing education here in ISKCON, and that's very nice. Like in Mayapur, there's several institutes of knowledge to educate people, and Vrindavan and many parts in the world. तो ये अभी शिल प्रभुपाद की कृपा से जैसे मायापुर में भी हमारा ये है, मायापुर इंस्टीट्यूट है, और फिर वृंदावन में भी है, तो ये सब है ना, हम आध्यात्मिक ज्ञान लोगों तक पहुंचा रहे हैं, आत्मा परमात्मा के बारे में बता रहे हैं लोगों को. Because this is the only solution. This Krishna consciousness is the only solution for all the problems of life. क्योंकि ये जो कृष्ण भावनामृत है, ये सिर्फ एक ही ये हल है जितने भी जो समस्या है हमारे जीवन की, उनको हल करने के लिए. Like Srila Prabhupada, Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada said, the only thing that is lacking in the world is Krishna consciousness. तो श्रील भक्ति सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने भी ये लिखा है कई जगह पे कि सिर्फ एक ही चीज की संसार में कमी है, वो है कृष्ण भावनामृत की कमी है पूरे संसार में. So that's why then Krishna sent Srila Prabhupada to this world for the great fortune of all of us here on planet Earth, that he came here, and all of us, we have now the opportunity to practice Krishna consciousness, to serve Krishna and serve the Guru Parampara Srila Prabhupada. इसलिए जो कृष्ण ने ना शिल प्रभुपाद के यहाँ पे भेजा है, ताकि हम लोग भी सब आध्यात्मिक इससे जो हमारी जो संस्था से जुड़े, हम फिर है ना जो जितना भी जो ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान को अर्जित करें, और शिल प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ें, और इस तरह से फिर हम लोग है ना उसका ज्यादा से ज्यादा हम लोग खुद भी उसका प्रचार कर सके हम लोग. तो इसलिए ये बहुत गुरु और कृष्ण की सेवा करते हुए हम भक्ति में आगे बढ़े और सबको इसका जो लाभ पहुंचाए हम लोग. Let us now continue with the work of Srila Prabhupada. तो शिल प्रभुपाद के जो उन्होंने जो बोल के गए हैं, वो अभी भी वैसा घटित हो रहा है इस संसार में. At the moment, it may not be so easy, but devotees really are expert in finding ways to preach, to give this knowledge to the people. तो इसलिए हमें जो बहुत सारे जो किसी न किसी तरीके से हमें ये जो ज्ञान है, जो हमारा आध्यात्मिक है, किसी न किसी तरीके से हमें लोगों तक पहुंचाना है और इसकी शिक्षा देना सबको. Like you have here, this wonderful opportunity to gather together. This is so nice, very nice to see this. I'm very happy to be part of it. Thank you very much. So this is Krishna consciousness movement to give this very, very important knowledge to the people, so that they would understand that the death is not the end, but it's just a phase to another, you could say, dimension, on another phase of life. तो इसलिए ये बहुत ही मेरा सौभाग्य है यहाँ पे कि मैं आज इतने सारे लोग हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, और सब लोग हम ये चर्चा कर रहे हैं इसमें, और ये जितना भी जो हमारे पास जो ज्ञान है, इसकी हम चर्चा करके दूसरों तक भी पहुँचाएं. और यही अच्छा दिखाई, तो हमारा ऐसा नहीं कि सिर्फ मृत्यु हो गई बस, खलास, मृत्यु के बाद कुछ नहीं होने की, मृत्यु के बाद क्या है, ये सब काम में ज्ञान होना बहुत आवश्यक है. This situation in the world is everyone wants it to be over at one point, but for a devotee, he understands everything practically by the grace of Srimad Bhagavatam, by the grace of this great Vedic knowledge, Bhagavatam and Bhagavad Gita, and so on and so forth. इसलिए ये जो हमें एक बहुत ही अवसर है दिया है श्रील प्रभुपाद के उनके पुस्तक के द्वारा, श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता के द्वारा, हम ये आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति करके और हम भक्ति में आगे बढ़े और दूसरों तक को भी आगे बढ़ा.
So that way, then devotee, he just goes on chanting Hare Krishna, worshipping Krishna, whatever the situation is, and tries to find ways to help as many people as possible to come into contact to Krishna consciousness movement as well. इसलिए जो भक्त लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण कि वो हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते जाएं और ये पुस्तकों को पढ़ते जाएं और ये दूसरों तक भी पहुंचाएं और दूसरों को भी भक्ति में आगे बढ़ाएं, ये बहुत महत्वपूर्ण है अभी हम लोगों के लिए. So thank you very much for giving me this opportunity, and I would like to close here. Was it that there could be any questions? So if there's any questions or comments, so please do ask. तो बहुत बहुत धन्यवाद. अगर आपके मैं आप लोगों का आभारी हूँ कि आपने मुझे अवसर दिया ये, और अभी आपके पास कुछ प्रश्न है, कुछ आपकी तरफ से कुछ कहना है तो आप बोल सकते हैं. हरे कृष्ण. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. Before we take the questions, if you could also highlight some more preaching activities in Finland, because it's such a wonderful place. We know has got a long day and a long night, and we can see the stars very beautifully. We heard that. But just if you could give some relishment on those activities of Krishna consciousness happening there, and just enlighten the devotees, because many of them are not so much in touch with that area unless they come there, you know. So we would appreciate if you can tell something about that. Then the devotees can raise the hands for the questions also. Okay, thank you. Yes, so we are not so big community here. We have one temple here in Helsinki. तो हम लोग बहुत बड़ा एक्चुअली देखा जाए तो ये हमारा संघ नहीं है इतना बड़ा अभी. हम तो एक हेनेस्की में एक ही मंदिर है यहाँ पे छोटा सा. But we try to follow, we strictly try to follow Srila Prabhupada's mission in preaching here in Finland. हमारे श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं का बहुत ही कड़ाई से पालन करके उनका अनुसरण करना चाहते हैं फिनलैंड में. And actually, we have quite big Hindu community here in Finland, around, let's say, 15 to 20,000 people. I mean, compared to our, we are not so many here in Finland, only 5.5 million, so like that. देखा जाता है फिनलैंड में बहुत बड़ा हमारा हिंदू जो समाज है, देखा जाए तो हिंदू समाज में 20,000 तक है. देखा जाए तो टोटल हमारा जो 55 लाख आबादी में पूरा जो देखा जाए तो फिनलैंड में उसमें 20,000 हमारे हिंदू है, जो काफी बड़ा समाज है हिंदुओं का यहाँ. So in our festival, our biggest festival, as well as pretty much everywhere, is Sri Krishna Janmashtami, and in one evening 2 years ago, when there was no pandemic, so there were more than around 1,300 people came to the festival in one evening. So for us it's a lot. तो इसलिए भी मुझे याद है कि 3 साल पहले जब ये पेंडेमिक नहीं था, महामारी नहीं थी, तब तो करीबन 3,000 लोग है ना यहाँ पे एकत्र हुए. सॉरी 1,300 लोग, 1,300 लोग है ना, वो एकत्र हुए कृष्ण जन्माष्टमी के उत्सव पे. And in normal situations, we get quite many people in the festivals. In our Sunday feast programs, there's, you know, around 80 people, and compared to other religions here in Finland, it's quite well actually. तो देखा जाए तो दूसरे धर्मों के तुलना की जाए, जैसे वहाँ पे जैसे लोग एकत्र होते हैं, तो हमारे लेकिन कृष्ण भागवत का जब प्रोग्राम होता है उसमें 80-90 लोग होते हैं, जो कि हमारा काफी संख्या मानी जाती है. कि तो बाकी अगर तुलना की जाए बाकी दूसरे जो संस्था है तो वहाँ के तुलना में ज्यादा लोग एकत्र होते हैं हमारे यहाँ. We have brahmacharis who go and preach, and even in this situation they try to find ways to go out and distribute books and prasadam. तो हमारे यहाँ कुछ ब्रह्मचारी लोग हैं जो कि इस महामारी की स्थिति में भी वो बाहर जाते हैं और प्रचार करते हैं और जो प्रभुपाद की पुस्तकें वितरण करने का प्रयत्न कर रहे हैं. And as I mentioned, as we are an official religious movement here in Finland, we have an official position of a priest. You could say a Brahminical position, that we can officially
like marry people and do these ceremonies, and they are official here in Finland. तो देखा जाए क्योंकि हम फिनलैंड जो सरकार के द्वारा हम मान्यता प्राप्त है हमारी संस्था, तो इसलिए हमें इसको बहुत ही मतलब एक सरकारी तौर के ऊपर ही हम शादी भी करवा सकते हैं यहाँ पे, और करते हैं हम हमारे ब्राह्मणिकल जो संस्कृति के हिसाब से शादियां होती है हम करवाते हैं, और वो मान्यता प्राप्त शादी हमारी सरकार की नजरों में, तो हम सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। And then there's also this teaching that we can teach kids in Krishna consciousness in the schools. We can teach them as you could say study of religion. Amongst there's many religions, all the official religions can teach. So we are one of the official religions, and we can teach. And I've been doing it more than myself, more than 15 years. I'm an official teacher also here in Finland. यहाँ पे क्योंकि फिनलैंड में बहुत सारे जो धर्म है वो धर्मों की यहाँ पे शिक्षा दी जाती है अलग अलग स्कूलों में, तो उसमें हमारा नंबर भी है। तो मैं भी पिछले 15 वर्ष ये जो जितने भी स्कूल हैं तो हमारी जो कृष्ण भावनामृत की शिक्षा दे रहा हूँ मैं, और वो भी मतलब सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। इसके लिए हमारा जो अधिकृत है हमारी जो शिक्षा अधिकृत है सब स्कूलों में। Yes, we have our temple deities are Sri Sri Goranitai, and it's a manor building. Like 6-7 years back, we got the opportunity. We could buy a building in one of the big centers of Helsinki, and we have a very nice temple there where we can develop this preaching and education and so on and so forth. तो हमने ये बहुत एक अच्छा बिल्डिंग में हमें 3-4 वर्ष पूरा मिला है, 4-5 वहाँ पे बहुत बड़ा है वो, और हमें ये बहुत अच्छा भी अवसर है कि हम अपने कृष्ण भावनामृत का प्रचार करें और सबको शिक्षा दें। So like this, if there's any questions there, I saw they were hand raised. So would you like to know more anything else about Finland in general, or shall I answer the other questions? Yeah, that's fine, Prabhuji. Thank you very much. I have a new place because I remember coming there in 2011, and that time I visited a Mataji and a couple actually. They were in Belgium and also there. So I didn't see a temple at the time. I mean, a big one. It was in a house. But now that you have a bigger place, we're happy. Yeah. We got the new place in the beginning of 2014, and we could buy it. Two big buildings, or one big building and another a little bit smaller in 2015. And we have also the land is there, 0.6 hectares land around the buildings. So all that is there. So that's really, you could say, us being so small, it's a great achievement that we finally could get something that belongs to ISKCON, really. Very great. तो इसमें हमें 2014 के आरंभ में हमें ये दो बड़ा बिल्डिंग वहाँ पे मिला है फिनलैंड यूनिवर्सिटी में। तो ये बहुत ही हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे ISKCON का भी इतना बड़ा जो 0.6 मतलब बोल सकते हैं आधा हेक्टर से भी ज्यादा है, तो 0.6 हेक्टर इतना बड़ा हमको जमीन मिला है वहाँ पे, और इतना बड़ा बिल्डिंग है। तो हमें बहुत गर्व होता है कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय समारोह का हमारे यहाँ पे फिनलैंड में भी इतना बड़ा जमीन है, इतना बड़ा हमारा जो सेंटर वो स्थापित हुआ है। Very good. Yeah. Okay, Captain Sanjeev Prabhu, please go ahead. Unmute yourself. हरे कृष्णा प्रभु जी, तपो दिव्यम दास प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। Actually, before 1 month I was in Helsinki and I got a COVID positive report there, and I was stuck and I was much afraid. Then Radha Baba Gauradasa, Ramakrishna Prabhuji and Gopinath Prabhuji, they are helping me very much, and these things only happen because Srila Prabhupada, they are making another community and some separate family to help each other, and I cannot express my words, but I was very happy there, and I was like a family member there, and
actually I was stuck in hotel. I cannot put my foot outside also. But Gopinath Prabhuji, he came every day to me, and especially he bring for me the prasadam, and he helped me much there, and I feel I am like in Dubai and something. And then within 10 days, by Krishna and by all the people, good wishes, I coming perfectly negative there, and I come back. So I just want to tell you, thank you very much. And we should have to connect with the ISKCON and serve the people and follow the Srila Prabhupada instruction, and Hare Krishna. And I was very happy there in Helsinki. I was there is minus 17 degree, much ice, much everything. But it was amazing for me, because when I fly from here, in my heart, I want to see the temple. But there is some business trip, so I just went it from Germany to Helsinki. Then I went to Roma, because my job is there. I have to visit the ship, because we are going to purchase the ship. But something happened there, and I was stuck in Helsinki, and so Hari Kripa, and so I make the darshana also there, Prabhupada, and so many Prabhuji, and your temple, and especially I was there 2-3 times. Yeah. Sorry. And thank you very much for your help, and I cannot. Thank you very much, Prabhu, and really it's by the grace of Gopinath Prabhu. He's a wonderful devotee, so he has done a really wonderful job, and I was very happy to hear when I heard from Gopinath Prabhu that yes, yeah, now we don't have snow anymore. Okay. The prasadam was so delicious that Ramakrishna Prabhu got complaint from Sanjeev Prabhu's Mataji that he has put in 7-8 kilos more after you came back. Okay. Exactly. Yeah, Exactly. And they are sending the prasadam for not one person. I think they sent it the prasadam for 3-4 person in the hotel. Yeah. Thank you, Tapo Prabhu, for taking care of our Shamadis devotees there, and in such difficult stage of COVID, especially, you all did wonderful seva there to help him out. So really thank you. And you're all welcome to visit Finland. If you visit, please contact us, and we try to make your stay in our temple then as good as possible. And Prabhuji, we have something to tell you about also. When you come to the UAE, we have to see you, and even we from now we invite you to our home to please come when you are in. Thank you very much. Very kind of you. Thank you. And I want to tell one more thing. The Radha Baba Gauradas Prabhuji and Ramakrishna Prabhuji, they are not only for me did the very good things. They are, I think, they are bringing this way so many families for Hare Krishna movement. And thank you very much, Radha Baba Gauradas and Ramakrishna Prabhuji and Tapo Divyam Das Prabhuji, and especially Gopinath Prabhuji. He is like now I cannot explain you. He is also in my heart, and I want to especially you have to tell him thank you very much from lot of UAE people, and especially from my family. I will tell. He will yes. So thank you very much. It's you've been so kind to us. I'm very happy to be here. Thank you very much, Radha Baba Gaura Prabhu, and all of you that I have had this opportunity to get to know you and be part of your society. Thank you very much. Hare Krishna. Big Hare Krishna mantra for you and your family and all the devotees there in Finland from all of us in Shamadis. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Hare. Thank you, Prabhu. Thank you so much. We have some announcements today. And, we have 2 devotees in our yatra right now going through COVID Baba's association.
One is Chandravadan Prabhuji. He went to Vrindavan and he got double mercy there. Of course, he's stable and recovering. And same way, we have Ratish Prabhu, who was about to fly back to Indonesia. And looks like the COVID devotees did not allow him to go. And they are both, he is also recovering. So, but please pray also for their stable health and that everything goes well with them. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Rama, Hare Hare. This Saptame, we have a very auspicious occasion, that is the appearance day of Lord Ramchandra on 21st. तो उस दिन शाम को हमारे साथ एक प्रोग्राम होगा. I am trying to get a senior devotee to speak to us. So